let's see how we can install the Terraform. So I Amazon Linux install करिए straightforward देची जहाँ भी selections तमें देखो जो Amazon Linux रो एटी first just copy this once log into your Linux machine तो मैं Amazon machines को login करी देची right using sudo yum install तो yum utils गोटे जोटा कि Amazon machine रो लोग हमें first install करेगा basically এটা Amazon Linux machine थिबा कथा जदि भी नाही अपडेटेड नाही then you can go ahead and install it okay so এটা install हे गला पर हमें कोन करबे next step दोची कोन ना एटा config manager को हमें ऐड करिबा जो repo okay yum config manager यूज करी कि एटा repo हमें ऐड करिबा add repo basicup.repo ये जो लोकेशन रो पर्टिकुलर लिंक देछि राइट ए लिंक को हमें कोन करिबा yum config manager यूज करी कि repo टा को ऐड करिबा okay so let's copy this particular part one by one. I'm showing you done so कौन कहला ना package install already install है कौन कहतली already most of the cases already install है थिबो जदि नथिबो installations then you can use this command okay ये already installing ही अछि updated versions में यूज करछि fine तो तापर हमें कौन करबा एबे ये पर्टिकुलर repo को ऐड करबा तो adding repo ऐड हे गला ऐड हे गला पर सिंपल ये कमांड हमें यूज करबा to install it okay sudo yum install terraform done so our terraform install हे गला fine so एटी बहुत सारा माने सेटअप्स हमें सिखिबा केमती कोन जो प्रोवाइडर हमें लास्ट क्लास में देखिथिले से प्रोवाइडर केमते हमें सेटअप करिबा तापरे एक्सेस कीज लाइक क्रेडेंशियल केमते सेटअप करिया ता विषय हम जाने जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट राइट तो वर्तमान हमर Terraform इंस्टॉल हे गला राइट सो हमें तार दी वर्जन चेक करिबा Terraform वर्जन्स लेट्स सी हम जदी खाली Terraform माउचे -v सी Terraform 1.14.3 version install ହେଇଛି okay the Terraform विषय किछि जानिबो कमांड विषय किछि जानिया को चाहौ then you can use Terraform help command so sorry -help तो एटा पूरा कंप्लीट डिटेल्स तमको Terraform रो कोन कमांड्स भी यूज होची पुना देखि दो हमें मोस्ट ऑफ द कमांड्स हमें देखिबा स्लोली वन आफ्टर अनदर राइट तो फर्स्ट ये जो कमांड्स सब होची धीरे-धीरे हमें जानिबा राइट तो हमें अबे कौन करिबा हमें जो फर्स्ट लास्ट क्लास रे हमें जो देखितले फर्स्ट प्रोवाइडर ऊपर डिस्कशन करथिले राइट तो प्रोवाइडर्स कोन जोटा कि हमको गोटे तारा प्लगइन्स दोची बा सॉफ्टवेयर दोची ताको यूज करी कि हमें कौन करिबा रेस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करिबा राइट तो तगरी विषय हमें मतलब मोस्टली विल डिस्कस ऑन दिस हमें प्रोवाइडर केमती यूज करिबा केमती प्रोवाइडर ब्लॉक केमती यूज करिबा से पर्टिकुलर प्रोवाइडर के जेमती लास्ट क्लास में बतैतली सपोज हम AWS को आसिले तो AWS रो यूज प्रोवाइडर राइट सेक्शंस को जदी क्लिक होछ तो पर्टिकुलर we can use this one so it is a कोन कहिछि ना 0.13 प्लस तो हमें यूज करूछि कोन ना 1.14 Terraform वर्जन्स हमें यूज करछे हम कोन यूज करलेबे जदि हम Terraform वर्जन्स देखिबा Terraform 1.14 ओके 1.14 हम तो एटा हम यूज कर पाइबा सो हम कोन करिया गोटे ब्लॉक क्रिएट करिबा जस्ट कॉपी करछे को तो जेटू कॉपी करिबो नले तार एग्जांपल्स बहुत सारा देई छिटी राइट केमती वर्जन्स तम यूज करिबो तो एठी हमें जदी वर्जन्स हम देखिबा वर्जन इक्वल टू 6.28 मींस हमें 6.28 वर्जन को ही डाउनलोड करिबा को वर्जन ता ना AWS प्रोवाइडर हमें कोन करछे रिक्वायर्ड प्रोवाइडर राइट लेट मी कॉपी एंड एक्सप्लेन यू दिस कोन करिबा बर्तन let's go ahead so we directory कोन करछी a particular let me create one directory here and get here Terraform okay Terraform lab the directory create कर दली cd Terraform lab okay तो मैं गोटे Terraform simple, 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 so
simple suppose I'll give as first lab dot yes. So I'm going Terraform file ro जो configuration file आमे लिखिबा रा तार extensions रहइबो .tf extension रहइबो .tf okay. So simple vi use करिक मु write करछि तो ए जो copy मु कली त just paste कर दोछि okay. You can copy and paste it. Fine. Let me paste this one. Done. So we take on na Terraform required underscore providers a block tam use karibo jota ke mu kon required providers mu eti deichi na AWS tame Azure jodi use korcho Azure dei paibo GCP use kor GCP dei paibo atar source path ra tar path na hashikup/AWS समथि Azure or देखियो जदि हमें Azure suppose हमें use करबा को चाहूचे then what we can do, so let's go to hashikup here, register. Suppose हमें Azure चाहूचे तो Azure click करो Azure RM देखो आसिला Azure RM right. तो एटा केमति यूज करो just click it here, see required providers Azure RM source hashikup Azure RM and version 4.57. The particular Azure RM जो AWS provides, Azure provider roila, right? See provides version होची 4.57. AWS रे कोन अछि ना the versions हम यूज करूचे that is 6.28. Fine. तापर provider block Terraform block बिस्तारे जानि गलो right जोटे कि हमर required underscore providers जहा भी तुमको provider तुम यूज करू से provider रो version source path दबा जोटी hashik जेतो एटा official to hashikup right तो एटी हमरा hashikup/AWS यूज करा पड़ी तो ई provider तापर next block आसुची केमति लिखिबो ना provider कोन provider ना हम यूज करछ AWS right double quote भीतर AWS रहिल curly braces simple कोन हमरो कोडिंग एटा this difficulties नहीं right ता भीतर हमें configuration option दबा ऑप्शन कोन दबा हमें कोन एक्चुअली चाहूचे सेटअप करिबा पई सपोज एठी कोन देले हमर तो वर्जन सिलेक्शन करि देले को पर्टिकुलर AWS वर्जन हमको दरकार प्रोवाइडर तासे तो को रीजन हमको कनेक्ट करियर अछि ओके सेटा कोन करे हम रीजन डिटेल्स टाइम को दबाल पड़ी राइट तो रीजन डिटेल्स दबा मु एठी कोन लिखिबी ना रीजन sorry region okay equal to तमे हाँ डबल कोट भितर जो रीजन तमे चाहछो सपोज मु कोन करछि मुंबई रीजन एशिया पैसिफिक मुंबई सो एपी साउथ हैपन 1 राइट तुम जान छ रीजन केमति सिलेक्शन करिवो राइट एपी साउथ 1 तमे जदि हमें रीजन कुछ सिलेक्शंस को जिबा ठीक है मुंबई रीजन AP-South-1 right AP-South-1 तो रीजन में सिलेक्ट कर दली तब रीजन में सिलेक्ट कर दले बट ए जो Terraform में इंस्टॉल करछि वर्तमान कोन दैट इज बीन इंस्टॉल्ड ऑन माय मशीन गोटे सर्वर रे मो सर्वर रे बा मु गोटे सर्वर नै कि इंस्टॉल करछि तो सेटी केमिति Terraform जानिबो मु को अकाउंट को कनेक्ट करिवि राइट तो सेति पे कोन करिया पड़ो ना हमें गोटे क्रेडेंशियल सेटअप करिया पड़ियो अकाउंट सेटअप करिया पड़ियो अच्छा तमे डिफरेंट वेज रे तमे क्रेडेंशियल सेटअप करि परिबो हम बतै दोछि केमति हमें जदि देखिबा डॉक्यूमेंटेशन रे से दैछि क्रेडेंशियल्स हाउ वी कैन select the credentials see authentication and configurations this is very important guys okay how we can do authenticate from the machines where you have installed the Terraform to the service provider to the provider right so AWS career provider connect careers तो AWS configuration तुमको करे पड़ियो right so different way रही parameters in provider configurations तमें provider configurations जो फाइल हमें बेटन लिखी चाहिए ये ब्लॉक भीतर हमें डायरेक्टली कौन credentials हमें एठी दे परिबा but that is not safe right because हमें जो credentials दबा that is very open to everybody
right? So anyone can see that. So it was good dangerous activity जो तो ये हमें केबे भी रखिबानी दो यू कैन कीप इट फॉर प्रैक्टिस तमे जो प्रैक्टिस में तमे रखी परिबो एठी नो प्रॉब्लम राइट बट तमे तो कंपनी पे काम करूछो बा किसी प्रोडक्शंस काम बा किसी भी डेवलपमेंट काम कंपनी पे करूछो देन you should always take care about the authentications secure authentications okay तापर एगुडा अछि एनवायरनमेंट वेरिएबल तमे सेट करि परिबो शेयर्ड क्रेडेंशियल्स फाइल गुडी क्रिएट करि परिबो शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशंस फाइल क्रिएट करियो कंटेनर क्रेडेंशियल्स इंस्टेंस प्रोफाइल क्रेडेंशियल्स तो तुमको मु दीटा वे रे बतै देबी रोल्स भी यूज करि परिबो जिम रोल्स एंड ऑल राइट तो यूज करिबो तो जी access underscore keys तो जदि तमे प्रोवाइडर पर तमे प्रैक्टिस करा पई चाहौ एठी तमे कोन करिवो ना एटा सेट कर दम access underscore key आउ secret underscore key तो मैं बे तुम क्वेश्चंस पचारिबी ऑलरेडी हम एटा जानि छै तो ए जो access underscore key आउ secret underscore key मैं कोठु पाइबी who can answer this ऑलरेडी हमर ऑलरेडी AWS क्लासेस रे ये सब सॉरी छी तो सेति पई हमें AWS आगे सिखिले तापर हमें Terraform सिखुचे राइट फर्स्ट थिंग सब बळे कोइ ऑटोमेशन करिया गुट तो मैनुअल थिंग्स केंती काम होची जानिया पड़े तापर ऑटोमेशन को आसी तो इटा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन करूचे सर्वर प्रोक्योरमेंट ऑटोमेशन करूचे ततस्त ऑटोमेशन करिया पूर्व तुमको मैनुअल थिंग्स जणातिबा दरकार राइट इटा ऑलरेडी हमें many times we already have seen these things access key underscore key and secret underscore key कोड पाइबा बा which okay my question is which service can provide us this access underscore key and secret underscore key in AWS or by using what service we can get these two credentials IDs parameters access underscore key how Sir, I think it IAM service रे पाइबा. yes exactly IAM so identity access management IAM use करके हमें टा पाई जीवा तो ये हला by using the what हमें दुईटा वे रे हमें देखितले गोटे console based authentication और हमें देखितले जोटा की पासवर्ड राइट हमें यूज करि परिबे कोन पासवर्ड बेस्ड जोटा कि हम डेवलपर माने यूज करंती थ्रू एपीआई कनेक्ट करिया पे हमको क्रेडेंशियल्स दरकार तो सही क्रेडेंशियल्स को हमें वर्तमान यूज करिया सेटा हमें पाइबा पे ता पे कि हमें कोन करिया गोटे यूजर क्रिएट करिया पड़ी हमको गोटे कोन यूजर क्रिएट करिया पड़ियो तो से यूजर क्रिएट हमें कोड करिबा ना आईएएम यूज करी IAM. राइट लेट्स गो हियर तो बहुत सारा क्वेश्चंस पचार भी गाइस सेति पे हम सबले कहूची तमे जदी टच रे न रहइबो देन नो पॉइंट ऑफ लर्निंग ऑल दिस थिंग्स गाइस हमें सिना टेराफॉर्म सिखिया पई बहुत जल्दी माने से भाबुजे बहुत सिखि दवा बट सिखिबे केम तुम तो फर्स्ट थिंग जस्ट टेराफॉर्म जोथि पई सिखिछो तो सेटा तमे जानि ना राइट मने पडुनी फर्स्ट सेटा ब्रश अप करो टेराफॉर्म जेंजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर माना पई टेराफॉर्म दरकार जे डेवऑप्स इंजीनियर तमे भी यूज करिवे जेतबे तमरो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड किछि स्टफ काम आसिला तो ता पूर्व तुम AWS हो बा जे कोन से क्लाउड कांसेप्ट हो यू शुड बी फैमिलियर विथ दैट राइट फाइन नाउ हम कोन करिवे लेट्स गो टू द IAM ओके IAM सर्विस तो मत गोटे यूजर क्रिएट करेगा अछि जदि मो पाखे ऑलरेडी यूजर क्रेडेंशियल्स अछि देन आई कैन यूज इट or if not then I can go ahead and create one user okay what I can do I can go ahead and create one access key again okay so मत दरकार command line interface दरकार और किछि access मत दरकार नहीं केवल CLI fine I understand then next create access key okay
access key गला download.csv file आउडे डाउनलोड गला perfect let's use this one तो मु कौन कली कॉपी कली इटा access key तामर जो console रे access key अच्छी थी जो कोड लेखुची हमें Terraform TF टाको ताकि हम करची just paste it here then similarly it will देखो इटा गुड डिफरेंट वेज रे तुम बताउची इटा डायरेक्ट तुम प्रोवाइडर ब्लॉक भीतर तुमरो एक्सेस की आ सीक्रेट की देई परिबो जोटा कि सेफ नो आउथरे कहूची जोटा कि सेफ नो यू शुड नॉट कीप योर credentials directly in the configuration file. This is not the ideal way to code it. Okay. So next the move बतलेबी केमती तमे तम मशीन रे सेटअप करि परिबो without giving configurations file. तमे एक्सेस करि परिबो ठीक अछि तो हमें सीक्रेट एक्सेस की को कॉपी कर देली just paste it then save it good so कोन है हमर first lab.tf गोटे configuration file हमें क्रिएट कर देले done so एबे कोन करियो हमें कनेक्ट करिबा चेक करिबा काम करछि कि नै तो तार फर्स्ट थिंग रिमेंबर तमे जितबल भी गोटे Terraform file लिखुचो configurations file make sure that file is clean and kept in project repository where you are working for the particular project specific. Okay, तो हमें बर्तमान कौन करिबा Terraform command यूज करिबा Terraform तो फर्स्ट जेतो तुम गोटे configuration file क्रिएट करिबा तो इनिशियलाइज तुमको करिया पड़ी Terraform init. So Terraform init मारिले कोन हबो तमे जोटी तमरो Terraform file अछि Terraform file अछि Terraform lab डायरेक्टरी भितरे बा फोल्डर भितरे तो मु सेठी Terraform init एग्जीक्यूट करिवि तो Terraform init मानम Terraform कमांड फर्स्ट ए जो tf फाइल टा देखिबो से फाइल को रीड करिवो ता भितर जहा प्रोवाइडर अछि से प्रोवाइडर प्लगइन को से इंस्टॉल करिवो कोडी ए मशीन रे राइट लेट्स सी Terraform init okay Terraform init see initializing the backend initializing the provider plugin so it is going to initialize the provider तो हमें कौन देखु छेठी 6.28 जो वर्जन ता हमें देइथिले प्लगइन रो सही वर्जन सा से कोन गला finding AWS versions match कला installing basic of AWS कोड इंस्टॉल करछ ए मशीन रे जोटी हमें Terraform एग्जीक्यूट करे बुझाउ छे see Terraform has been successfully initialized remember guys तमे जतबळे भी किछि भी वर्जन चेंज करूछ प्रोवाइडर रे प्रोवाइडर वर्जन्स बा विगत तमे को इनिशियलाइज करबा को पड़िबो ओके तमे जे कोनसी फोल्डर रे दरा सपोज आ गुडे नुवा फोल्डर क्रिएट कलो से फोल्डर रे तमरो Terraform फाइल रखि छै करछ तो सेट एग्जीक्यूट करिया पर इनिशियलाइज तमको करिया पड़िबो ओके तमर बर्तन फर्स्ट इनिशियलाइज कर देले तो इनिशियलाइज Terraform has created a log file तो जतबे तुम इनिशियलाइज करिवो Terraform गोटे कोन लॉग फाइल क्रिएट करिवो आ लॉग फाइल विषय स्टेट फाइल विषय कंप्लीटली हमें बुझिबा इन एडवांस क्लासेस रे बहुत सारा क्लासेस हमरो जे डिटेल्स रे फर्स्ट तुमको बेसिक्स बतै दोची बा स्टार्टिंग बतै दोची तो तुम स्टार्टिंग क्लियर जदी रहि जिवो तो तुम नेक्स्ट सब आराम से इजीली यू कैन मूव ऑन राइट सो लॉग फाइल विषय पर जा देखिबे त हम जदी यूज करबे त सर्टेनिटी बटन पर्टिकुलर फाइल अछि तो लॉग फाइल ता कोन हमर हिडन फाइल रे अछि राइट dls-la मारुछि सी गोटे Terraform गोटे फोल्डर क्रिएट करछि जाटा कि Terraform रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब ता भीतर अछि आ गोटे लॉग फाइल से क्रिएट कर दला तो ई लॉग फाइल ले कोन वर्जन इंफॉर्मेशन सब स्टोर हे किथिबो त हम पूरा डिटेल्स रे बुझिबा तो बर्तमान कोन हला जस्ट इनिट कली तापर हम Terraform प्लान मारिबा Terraform प्लान कोन करिवो ना जहां भी हमरो Terraform कॉन्फ़िगरेशन फाइल रे जहां भी हम लिखुचे जो भी ब्लॉक लिखुचे ताकू से प्लान करिवो तम रिक्वायरमेंट हिसाब रे तम जहां भी थिबो तम लिखुथिबो सेटा जे प्लानिंग करिवो बे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिया और जे प्लान करिवो राइट तो जेमति कि हमें नॉर्मली गोटे
हमर हाउस बनना होची राइट गोटे बिल्डिंग हमें बनौची तापे हमें गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर गोटे स्पेस सिलेक्ट करची तापर गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डिजाइन करची प्लानिंग करची राइट प्लान सरिला पर तापर एग्जीक्यूशंस कराउची एग्जीक्यूट कराउची सिमिलरली एठी भी हमें कोन जाबी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको दरकार हमें कोन बोले tf फाइल लिखि दबा terraform configuration फाइल लिख दो तापर ताको प्लानिंग करियो तापर देन यू कैन एग्जीक्यूट इट सिंपल थिंग्स सो हम कोन बोले terraform प्लान जेतो हमर एठी किछि नै जस्ट terraform provider ब्लॉक अछि आ किछि भी हमें रिसोर्स ऐड करी नै तो सेते पे किछि दरकार नै just terraform plan to make sure that the terraform configurations file whatever is there inside based on that it will do the planning. Okay, let's see. So on coaching no changes your infrastructure matches the configurations. Perfect means I don't have kept anything in the terraform file right तो किछि भी नहीं तादरे से कोन मैच करिवो किछि मैच करिवो किछि चेंजेस देखिवनी जहां भी हमर कॉन्फ़िगरेशन फाइल अछि सब सही कॉन्फ़िगरेशन फाइल रो स्पेसिफिकेशंस हिसाब रे जहां भी हमें लिखि जे सेटा मैच करिवो तमर इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तो हमें तो किछि ही देइने वर्तमान तो नहीं so terraform has compiled your real infrastructure against your configurations and found no differences so no changes are needed बुझी पारला कोन होला मतलब terraform plan माइली से कोन कला ना जो क्रेडेंशियल्स हमें एटी सेटअप करिचे प्रोवाइडर यूज कर AWS राइट सही क्रेडेंशियल से यूज करी AWS अकाउंट को से लॉगिन कला को AWS अकाउंट को मोर ए पर्टिकुलर AWS अकाउंट को से लॉगिन कला राइट लॉगिन कला पारे से कोन करछि चेक करूछि किछि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हेछि कि ना तो हमें तो किछि इंफॉर्मेशन ही देई नै खाली लॉगिन करबा को देइ आ किछि तो इंफॉर्मेशन नहीं तो सेति पई कोन करछि terraform has compiled your real infrastructure so this is our real infrastructure right means this environment हमर किछि इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क हमर कोन बर्तन इंफ्रास्ट्रक्चर कहया बोले हमर केवल नेटवर्क ही अछि केवल VPC हम पाखरे डिफॉल्ट VPC और रिक्वायर्ड नेटवर्क सेटअप्स हम पाखरे क्रिएट हेकि अछि राइट तो your configuration and found no difference fine तो बर्तन हमें देखिबा हमर ई पर्टिकुलर फाइल ता हमें जानिले प्रोवाइडर ब्लॉक्स केमती यूज होची ओके परफेक्ट हमर क्रेडेंशियल हिसाब रे से कोन कनेक्ट कला ते क्रेडेंशियल्स ता हमें ओपन रे रखी छे बर्तन बते दो नेक्स्ट हमें कोन करबा ई क्रेडेंशियल्स को हमें हाइड कर दवा सिस्टम रे सेटअप करिवे ई क्रेडेंशियल हमर देखि परिबेन राइट तो से ता पूर्व कोन करछि हमें बर्तन कोन केवल कनेक्टिविटी टिके टेस्ट कर देले राइट तो एबे हम तरे चेक करबा रिसोर्स ब्लॉक तो रिसोर्सेस कोन ना हमरो जहां भी सर्विसेज हमें यूज करूचे terraform रे सॉरी AWS राइट तो से सब सर्विसेज each service has a resource name acquainted with that so हमें terraform जो यूज करिबा सब जाक हमें रिसोर्स हिसाब रे डील करिबा तो हमें EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूची ओटे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करबे तापर तो बहुत सारा रिसोर्स नेम हमें यूज करिबा terraform तो रिसोर्स माने कोन व्हाट इज दिस रिसोर्स नेम so resources are the most important element in the terraform language each resource block describes one or more infrastructure objects तमे तो गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करूचे तर सपोज गोटे सर्वर क्रिएट करूचे जे सर्वर रो बहुत सारा खाली तमे जीवानी जे सर्वर खाली जीवा धरी पळे आसी राइट ता सहित गोटे सर्वर आनिबा आगु हम बहुत सारा कोन डिसिजंस नबाउ पड़ियो राइट हम रिक्वायरमेंट हिसाब रे तुम जब मार्केट को जो गोटे लैपटॉप आनिबा पय लैपटॉप आनिबा आगु तुम रिक्वायरमेंट फर्स्ट तुम जाने पड़े लैपटॉप रो रिक्वायरमेंट कोन अछि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन दरकार तुम्हारा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस कौन दरकार मेमोरी केते दरकार स्टोरेज केते दरकार राइट कंप्लीट डिटेल्स तुमको दरकार तो सेटा सब हम रिसोर्स ब्लॉक रे terraform रे जो क्लाउड रे गोटे सर्वर नउचे तम कौन कॉन्फ़िगरेशन दरकार सब कौन सेटअप दरकार कौन नेटवर्क रहबा दरकार राइट तार कंप्लीट डिटेल्स हम रिसोर्स तो से जो सब ऑब्जेक्ट यूज कराबो से ऑब्जेक्ट गोटे गोटे सब रिसोर्स हिसाब यूज होची terraform रे
So resources are the most important element in the Terraform language, which each resource block describes one or more infrastructure object, such as virtual networks, computer instance, high-level components, DNS records, storage, memory, everything. Okay, तो ये जो सिंपल एग्जांपल्स टा एठी अछि तमे देखि पड़तबो एथरे कोन अछि AMI यूज होछि, राइट, जोटा Amazon मशीन इमेज। तो आम को सपोज इटी कोन होछि मोटे रिसोर्स ब्लॉक हम यूज करछे। रिसोर्स ब्लॉक केमती फर्स्ट क्रिएट करो, फर्स्ट जो कीवर्ड यूज हबो रिसोर्स, ओके, तापरे रिसोर्स ना कोन को रिसोर्स तमे यूज करछो। इट सपोज डबल स्कोर इंस्टेंस अछि, राइट, कोन तमे यूज करछो। एठी मु यूज करली रिसोर्स कीवर्ड यूज होला AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस कोन रिसोर्स को रिसोर्स तमे यूज करछो इंस्टेंस, तापरे सेही तार गोटे ना गोटे तमे दबो, जे कोनसी ना गोटे दबो, तापरे तमे यूज करिवो कोन पैरामीटर्स ता भीतर दरकार। तो ये पैरामीटर्स तमे जानिबो कोन, सब तो नुवा नुवा तमे किछि जानि नथिबो, राइट। तमे जानिबे केमते यूज केमते करबा, use this document to get all these parameters, okay, attributes, parameters, everything, all the attributes, parameters, everything we can get it over here, okay. So हमरा EC2 देखिबार अछि, मतलब गोटे सर्वर क्रिएट करियार अछि मो रिक्वायरमेंट। तो मको जिबी EC2 सेक्शंस को जिबी, ओके, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, तो EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड असली। तो एठी मते दरकार गोटे सर्वर क्रिएट, देखो एठी बहुत सारा रिसोर्सेस अछि, बहुत सारा ऑब्जेक्ट अछि, केते सारा बहुत सारा ऑब्जेक्ट अछि। तो वर्तमान ये ऑब्जेक्ट भीतर मते फाइंड आउट करियार अछि मते को ऑब्जेक्ट ता क्रिएट यूज करिवि, राइट, को रिसोर्स ता यूज करिवि। तो को रिसोर्स यूज करिवि मु, सपोज मते दरकार गोटे इंस्टेंस क्रिएशन, राइट। तो मेटी चेक करिवि AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस, सी AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस, क्लिक इट हियर। So AWS underscore instance कौन provide करछि, that provides an EC2 instance resource and EC2। तो हमें AWS underscore instance resource यूज करी कि करना गोटे सर्वर क्रिएट करि पाइबा, ओके। सो तार ए पर्टिकुलर से सब रिसोर्स रो जे कोन से रिसोर्स तुम यूज करिवो तार गोटे गोटे से सब रिसोर्स रे सब जगह तार एग्जांपल्स देते, बहुत सारा एग्जांपल्स दियो, बहुत एग्जांपल्स, बहुत डिटेल्स रे अछि, ओके। तो सब तो डिटेल्स तुम मन रखि परिबन ना, सो यू शुड ऑलवेज फॉलो द डॉक्यूमेंटेशंस, ओके। नाउ तो इटा में सिंपल देखि हम जदी तळु बुझिबे किछि एग्जांपल्स देछि, ता परे हमें देखियो तार एट्रिब्यूट्स आउ तार सी एट गुरा यूज है आर्गुमेंट्स, कौन आर्गुमेंट यूज करिवो आ कौन एट्रिब्यूट। देखो each resource block consists of arguments and argument बा तमे पैरामीटर कहि परिबो, सेटा पैरामीटर बा आर्गुमेंट कहि परिबो, ओके। आर्गुमेंट आउ बटाइला कोन एट्रिब्यूट, से आर्गुमेंट को कोन एट्रिब्यूट पास कराबो, तो सेटा एट्रिब्यूट डिटेल्स ता तळे कंप्लीट एट्रिब्यूट डिटेल्स होइतिबो। Metadata options, network interface, network subspot. What is that attribute? Okay. Okay, attribute reference. Okay, तो कौन attributes सब यूज हो। ओके, से attribute कौन यूज हो, attribute सेक्शन हम परे बुझिबा attribute केमिति यूज हो, कौन पे यूज हो, बट एबे हमें फोकस करिबा कोन आर्गुमेंट ऊपर, पैरामीटर्स कौन पास करिबा। तो हमें रिसोर्स देखि देले AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस रिसोर्स हमें यूज करिबा, ये सब आर्गुमेंट यूज हिची, राइट। आर्गुमेंट आउ आर्गुमेंट रो जहा आर्गुमेंट्स यूज करिबा नेम ये सब डिटेल्स। तो एठी गोटे स्मॉल एग्जांपल्स हमें देछि, हेलो वर्ल्ड एग्जांपल्स, ओके। तो मु कोन करछि, सिंपल गोटे रिसोर्स AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस यूज करछि, राइट। तारा यूसेज केमति ठीक पूरा डिटेल दे देछि। तो मु कोन करछि आ गोटे ब्लॉक लिखुछि। से ब्लॉक ना कोन हो, एठी देखो एटा प्रोवाइडर ब्लॉक, टेराफॉर्म ब्लॉक, ओके। एटा प्रोवाइडर ब्लॉक, जो प्रोवाइडर यूज करो तार ब्लॉक गोटे, तापर सही प्रोवाइडर रो कोन रिसोर्स तमे यूज करिवो। तो मु रिसोर्स ब्लॉक गोटे क्रिएट करली, रिसोर्स ब्लॉक।
resource block पर कौन resource use करिवो, right? को type resource कौन? It's तो मतलब offer on the दरकार provider blog. हाँ It's offer on the provider blog होगा ना Terraform. provider जो required provider ना इसलिए offer the provider blog ना. Oh, ठीक है ठीक है. ना ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖ ଆମେ କଣ କହିଲି Terraform ର version 0.13 plus ତମେ ଯଦି ୟୁଜ କରୁଛ then you should mention this option। ତ before କଣ ହଉଥିଲା ଆଗରୁ ଆମେ କେବଳ ଯଦି ପ୍ରୋଭାଇଡର ଦଉଥିଲେ ତ Terraform କଣ କରୁଥିଲା by default AWS ନେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କଲେ ନା Terraform ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଟା ୟୁଜ କରୁଛେ ସେଥିରେ required underscore provider ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ କୁ ଆମକୁ ଦରକାର ସେଇ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଇନଫର୍ମେସନ ୟୁଜ କଲେ। सपोज मते AWS अछि मते एटी Azure RM तो मु एठी कोन कली रिक्वायर्ड प्रोवाइडर आ गोटे लिखिदेली एठी Azure RM इक्वल टू सोर्स लिखिदेली वर्जन लिखिदेली ता दुईटा प्रोवाइडर मु एठी लिखिदेली तो मते जो प्रोवाइडर मते यूज करे अछि मु एठी यूज करि परिबी। तो वर्तमान मु एठी कोन करछि केवल रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स AWS मु एबे Azure RM नै परिबी यदि चाहिबे Azure RM न एठी काम करबिनी कारण गुटिए मु देइछि प्रोवाइडर रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स AWS बुझि पालो। हाँ yes sir. तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡର ବ୍ଲକ୍ସ ନେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ଚାହୁଁଛ ତମେ Azure RM ସପୋଜ ଫ୍ୟୁଚର ତମେ ଚାହୁଁଛ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ Azure RM ରଖିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ତମେ Azure RM ପ୍ରୋଭାଇଡର ବ୍ଲକ୍ ତମେ ନେକ୍ସଟ ୟୁଜ କରିପାରିବ ଦରକାର ହିସାବରେ। ସେମ୍ ଗୋଟେ କନଫିଗୁରେସନ ଫାଇଲରେ ମଲ୍ଟିପଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫାଇଲ ରଖିବାଟା actually provider is not good idea, right? It's not good coding style। so ଆମେ କଣ କରିବି AWS यूज कले तबरे रिसोर्स ब्लॉक मु लेखुची गोटे जोटा कि AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस रिसोर्स दरकार से रिसोर्स नाटा मु लिखि देली तापरे जस्ट गोटे ना देई दबा सपोज मु दे देली फर्स्ट लैब डेमो first lab demo server, okay? Then starting with curly braces end with curly braces, okay? तापरे हम कोन दरकार हमरो एठी किछि आर्गुमेंट आमे दबा तम कोन बेसिक आर्गुमेंट्स कोन दरकार ना आमे गुटे जो सर्वर फर्स्ट आमे क्रिएट करतो मैनुअली क्रिएट करछ सर्वर जो मैनुअली क्रिएट करछ आमे फर्स्ट सिलेक्शन कोन करूचे गुटे इमेज मशीन इमेज राइट अमेजन मशीन इमेज तो आमे से मशीन इमेज ता दबा राइट AMI इक्वल टू तो कौन मशीन इमेज हमको दरकार तो AMI केमती पाइबो तमे जानिछ AMI केमती तमे पाई परिबो राइट। so we can go ahead and get the AMI details, right? so मुझे DGB EC2 instance को EC2 services को तो एठी हमर अछि कोन images AMIs, right? AMIs and AMI catalog so AMIs रे मोर किछि AMIs क्रिएट करिनी से किसी ना ब्लैंक तो मैं AMI कैटलॉग जीबी जोटा कि Amazon रो कैटलॉग्स जोटे सब AMI अछि तो मते जेकोसी AMI दरकार एटा कोन AMI मशीन इमेज गोटे आईडी दरकार AMI आईडी मते नवार अछि। तो देखो एठी जदि मु आसुची AMI आईडी पूरा लिस्ट दि पाई गेली बेसिकली तो मतलब कंपनी काम करछ तम कंपनी हमकु प्रोवाइड करिवो को AMI बा को इमेज आईडी तमे यूज करिवो। Image is nothing but what is actually the image? What is the image? Image actually consists कौन करछि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स राइट जहां हमक सब दरकार it consists what is the AMI Amazon machine image it consists of the it is actually template which holds all the informations for the operating system softwares installed softwares libraries binaries whatever is required already been packaged inside that image right we need that image to create
सर्वर जेमती हम गोटे लैपटॉप नवा गुरु हमको को ऑपरेटिंग सिस्टम दरकार कोन सॉफ्टवेयर दरकार एटा हमें देखुचे ने नहीं एटा हला कोन फर्स्ट सॉफ्टवेयर पार्ट जोटे हमर ओएस पार्ट तापर हमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऊपर को जो जोटे हमर इंस्टेंस टाइप ओके तो फर्स्ट हमें दीटा बेसिक दिन हमको दरकार गोटे एएमआई आ गोटे इंस्टेंस टाइप कोन सॉफ्टवेयर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हमको दरकार और नेक्स्ट हमको कोन हार्डवेयर टाइप दरकार तापर हमें कंप्लीटली काम करिवे राइट तो मैं कौन कल एएमआई तुम एमती डायरेक्टली सिलेक्ट करि परिबो किंबा गूगल सिंपल सर्च करिवो लिस्ट ऑफ अमेजन मशीन इमेजेस तुम पाइ जीवो ओके आ कंपनी माने जेंती कहली इमेज तुमको एटू नबागु पड़िबनी जदि भी तुमको को स्पेसिफिक इमेज तुमको नबार अछि then you should come here and based on your requirement you have to find out which image is required then you can use it okay now let's select it sorry ओके इमेज आईडी नहीं गले तो आम कौन कर इमेज जो इमेज आईडी हमको दरकार इमेज आईडी नहीं गले तापर हमको कौन अच्छी दरकार इंस्टेंस टाइप तो हमको सॉफ्टवेयर पाइला हम हार्डवेयर दरकार बर्तमान राइट तो हार्डवेयर पाई हम कौन दरकार इंस्टेंस टाइप देखियो पड़िबो राइट तो एठी हमें देखियो पड़िबो इंस्टेंस टाइप रो आर्गुमेंट केमती हमें लिखुचे पैरामीटर यूज करचे इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप सो हमें कौन करबा इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप ओके तो बर्तमान ए क्लास रे तुमको जहां बेसिक सेटअप व कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखिवाटा सिखे लोजी नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हमें टिके फास्ट मूव करिवे कारण तुम ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन फाइल केमती लिखिवो जानि जाइथिवो तापर हमें क्विकली मूव करि जिवा ओके तो एठी बोलवा पे फोकस पर केमती तुम को लिखिवो ओके तो मतलब इंस्टेंस टाइप गोटे दरकार माने हार्डवेयर दरकार तुम जहां भी तुम दरकार मतलब T2 माइक्रो की T3 माइक्रो की T2 मीडियम T2 लार्ज की M3 M4 लार्ज M3 जहां भी तुमको दरकार तुमर रिक्वायरमेंट हिसाब रे तो ताकू भी केमती पाइबो तुम जदी जानि नथिबो तुम कोन दरकार तो as an infrastructure engineer a cloud engineer you should know where to get and what configurations you need तो तुम रिक्वायरमेंट हिसाब रे तुम जहां कॉन्फ़िगरेशन दरकार तुम ये पाइबो तो हम इंस्टेंस टाइप को जदी जिबा एठी राइट इंस्टेंस टाइप्स एठी पर्टिकुलर सब इंस्टेंस टाइप्स हमें एठी पाइ जिबा राइट कंप्लीट इंस्टेंस टाइप को हमें पाइबा जा जा दरकार ओके सो बहुत सारा अच्छी एमती 1 2 3 डिफरेंट पेजेस आर देयर सो तुम कॉन्फ़िगरेशन हिसाब फाइंड आउट करिवो और सही इंस्टेंस टाइप ता तुम सेटअप करिवो तो मते बेले बर्तमान कोन अछि इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप मते सपोज मु जस्ट हमर डेमो पई प्रैक्टिस पई T2 माइक्रो मिल जाउछ एवरीवन्स फेवरेट इंस्टेंस टाइप राइट तो हेगला मते एतिक बेसिक दरकार और किछि दरकार नै तो तुम जदि चाहूछ जहाँ भी ऐड करिया पई तो सपोज हमर कोन हमें जिबा एठी टैग ता ना भी कोन गोटे दबाउ चाहूछ तो हमें टैग्स ब्लॉक भितरे बा आर्गुमेंट भितरे गोटे नेम दे पाइबो हैला एटा ऑप्शनल टैग्स आर ऑप्शनल राइट मीनिंगफुल ऑप्शनल बट मीनिंगफुल तमे इधर गोटे सर्वर क्रिएट कर तो ना दबाउ चाहूछ देन you can give it तो टैग्स यूज करी तो फिल्टर भी बहुत कर पारे तो रिक्वायरमेंट थी वो तो टैग्स यूज करी करी हेलो वर्ल्ड रे केतरा एप्लीकेशन सर्वर अछि तो हेलो वर्ल्ड सर्वर न तर हेलो फिल्टर कर दला हेलो हेलो स्टार्टिंग रे केतरा सर्वर आराम से पाइ छी तो से टैग्स तो बहुत इंपोर्टेंट हुए जे तो एटा ऑप्शनल अछि तम नदले भी चलियो बट जेतबे तमरो रियली तमे मल्टीपल सर्वर्स काम करछ टैग्स हैज अ वेरी मीनिंगफुल रोल ओके बहुत बढ़िया रोल टैग अछि तो तुम टैग्स को दे करियो तो हम टैग भी तो दी दबा को चाहूची केमति करबा ना टैग्स इक्वल टू तार फॉर्मेट ता तुम इजीली पाइ जिवो एटी टैग्स केमति लिखाइ छी राइट तो मैं दे देली नेम जा गोटे ना दे देली सिमिलरली सी नेम इक्वल टू हेलो वर्ल्ड देली टेस्ट सर्वर ओके डन तो एटा हम गोटे रिसोर्स ब्लॉक हमें क्रिएट कर दे टैग इज ऑप्शनल ओके सो
दे पारो न भी दे पारो तुम एटी जस्ट बुझिया पे तुमको दे देली डन मोर गोटे रिसोर्स ब्लॉक मु गोटे क्रिएट करदली तो रिसोर्स ब्लॉक रे कोन करछि एटा ना मु नेछि aws_ इंस्टेंस ता माने मोटे EC2 इंस्टेंस गोटे सर्वर क्रिएट करिया अछि कॉन्फ़िगरेशन कोन ना कॉन्फ़िगरेशन रोछि एई इमेज रो Amazon Linux रो इमेज एटा मुझे चाहूँ उबुंटू क्रिएट करा पे देन उबुंटू इमेज आईडी दे परिबी CentOS नउची CentOS रो इमेज आईडी दे परिबी विंडोज नउची विंडोज रो इमेज आईडी दे परिबी राइट देन इंस्टेंस टाइप कोन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मते दरकार हम सिलेक्ट कर देली राइट देन नाउ लेट्स गो ahead and save it sorry सेव हेला तो सेव हेला फर्स्ट तबे कोन करबे बे मु प्लान करबी इंफ्रास्ट्रक्चर राइट आउ हमके इनिशियलाइजेशन करिया पड़िबे इनिशियलाइजेशन जदि सही पर्टिकुलर फोल्डर तमे अछ पर्टिकुलर वर्जन पई काम करछ देन यू हैव टू इनिशियलाइज वंस ओके ओनली वंस सो इनिशियलाइज हे गला एबे तो नुआ फोल्डर गोटे क्रिएट कलो नुआ टेराफॉर्म फाइल कलो देन यू हैव टू इनिशियलाइज अगेन ओके तो हम करिया अछि बटन कोन प्लान करिया अछि हम कोन करिबे टेराफॉर्म प्लान से प्लानिंग जो फाइल हिसाब रे जहाँ प्लान करिया अछि से बर्तमान हमको प्लान करी के दबो ओके जे तुमको ये दिन से दरकार पूरा कंप्लीट लिस्ट दे दबो जस्ट फोल्डर ओके सी प्लानिंग कंप्लीट हे गेला केते इन्फॉर्मेशंस देला देखो तो AWS इंस्टेंस गोटे फास्ट लैब डेमो सर्वर विल बी क्रिएटेड विथ ऑल दिस डिटेल्स AMI हमें यूज करछे एटा ARN नोन आफ्टर अप्लाई कला पर जना पड़िबो इंस्टेंस टाइप कोन नै छे T2 माइक्रो नै छे ये सब लिखि छे नोन आफ्टर अप्लाई हमें तो एग्जीक्यूट करबा ता परे जाई इशू हमको डिटेल्स जना पड़िबो रीजन हमें कोन सिलेक्ट करछे एपी साउथ 1 जोटा कि हमरो प्रोवाइडर रे दै छे ब्लॉक रे राइट कंप्लीट डिटेल्स हम पाइ ओके तापर से कोन कोचे अप्लाई कर सला पर तुम चाहू जदी सॉरी प्लान कर सला पर तुम जदी अप्लाई करा पे चाहू से लिखि दो छी Terraform यू कैन एग्जीक्यूट दिस Terraform अप्लाई ओके सो इफ यू आर हैप्पी तुम जदी गोटे कुछ प्लानिंग करूचो राइट so the planning you are satisfied that you are whatever you are planning for the infrastructure to create if you are happy with that then go ahead and execute it apply it okay so हमें कौन करिया अभी जीवा और apply करिया use Terraform apply done so it will take some time to apply the infrastructure based on the configuration file the way to enter value yes or no you have to give so yes see fast lab demo server creating so be button create करूची सब बर्तन क्रिएट करूची ओके स्टिल क्रिएटिंग तो कौन करिवो ना जो क्रेडेंशियल्स हम देजे ताको कनेक्ट करी करी स्टामे कोन हमर AWS अकाउंट से कनेक्ट करिवो आ गोटे कंप्लीट डिटेल्स रे क्रिएट करिवो जहाँ भी रिक्वायरमेंट अछि जस्ट होल्ड ऑन फॉर फ्यू सेकंड्स ओके ये टाइम नो स्टिल क्रिएटिंग डन सी created apply complete resource 1 added किछि चेंज है नहीं किछि destroy है only one resource we have added done so let's go ahead right तो हमें कौन गले एबे जस्ट सिस्टम रे रही करी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देले बा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के एग्जीक्यूट कले और ऑटोमेटिकली हमें देठी की जीवा तो हमर गोटे सर्वर क्रिएट हो जाई थियो instances see server just गोटे सर्वर हमर बीटा गुड थिला Ansible Terraform बट एबे गोटे सर्वर क्रिएट होला इनिशियलाइजिंग T2 माइक्रो हमर क्रिएट होछ ओके these two servers जो दुईटा सर्वर आगुरु थिला Ansible Terraform एटा कोन हम मैन्युअली क्रिएट करथिले राइट बट ए जो सर्वर टा हम कोन करली थ्रू Terraform इंटीग्रेटेड होला सर्वर हमर क्रिएट होला तो वर्तमान हम सर्वर क्रिएट तो करि देले राइट बट सर्वर को कनेक्ट करि परिबा नै मु जस्ट एबे तुमको डेमो देखौतली केमति सर्वर क्रिएट करिवो सर हम कोन कला माने हमर अकाउंट को कनेक्ट करिके हम अकाउंट यूज करिके जो यूजर अकाउंट देथिले क्रेडेंशियल ताके यूज करिके से कोन कला ना हम पई गोटे सर्वर क्रिएट कर दला बट सर्वर तो क्रिएट कला हम एठी किछि कोन
की शेयर करिने जोटा को की हमें मेंशन करिने जोटा के हमें यूज करी कनेक्ट करिवा ओके सो नेक्स्ट क्लास रे हमें आउरी डिटेल्स रे जिबा केमती सर्वर क्रिएट करे ताको कनेक्ट करिवा आ डिटेल्स रे बहुत सारा डिटेल्स अछि हमें जानबा ओके नाउ what we can do now I just created one server okay so let me show you hold on okay so our server create तो हेगला वर्तमान जहाँ भी हमें ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ right so ଏଠି କଣ କରୁଛି ଦେଖ କିଛି Terraform state file create ହେଲା ଏ state file ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चंस आसीबो तुमको आ एटा बहुत इंपोर्टेंट तुमको जानिबा पड़िबो कारण हमरो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट कले राइट जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट कले से इंफ्रास्ट्रक्चर कोन रिसोर्स बतेल जेमती गोटे ऐड हैला रिसोर्स ऐड हे देखि एटा हमें देखितले क्रिएट कला राइट तो ए पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशंस जहां भी हमें क्रिएट कले सब जगह Terraform स्टेट फाइल रे थिबो तब से हम पूरे परे जानिबा कंप्लीट डिटेल्स रे तो एबे कोन हैला ने हमर कॉन्फ़िगरेशन फाइल हिसाब रे हमर रियल इंफ्रास्ट्रक्चर गोटे क्रिएट हे गला this is the real infrastructure okay and this is the configuration file what we have created this is the configuration file what we have created this is the configuration file okay तो बुझी पहला हम रिक्वायरमेंट हिसाब रे हम क्रिएट कर दले तो चाहो छ तमे सर्वर को देखो तमे सर्वर दुईटा वे रे तमे क्रिएट करबो गोटे हला मैनुअली गोटे हला ऑटोमेटेड वे तो ऑटोमेटेड वे इज द best way whenever you are dealing with multiple servers and repeatedly regularly you are working on multiple servers provisioning multiple servers modifying multiple server managing multiple servers right so those that time you need to use Terraform otherwise if you are working on only single server only once created then there is no point of using the Terraform because it is again see it's DevOps पढुचे हम सब बेले कंसीडर करूचे कोन केमती गोटे जिंस को हमें इजीली हम कन्वीनियंट हिसाब रे केमती इजीली हमें ऑटोमेट करि पारि तो सेति पे तो हम DevOps सिखुचे राइट रिक्वायरमेंट हिसाब रे तुमको ऑटोमेशंस यूज करिया पड़िबो फाइन तो हमरो सर्वर क्रिएट हे गेला वर्तमान तो कंप्लीट डिटेल्स रे हम देखियो इट्स रनिंग नाउ इफ यू वांट टू यूज इट और डिस्ट्रॉय इट तो हमें कौन करिया मतलब सर्वर तो क्रिएट कर देली मतलब धर सपोज सर्वर दरकार नहीं मतलब डिलीट करिया अछि रिमूव करिया अछि राइट तो आप तुम यूज कर परिबो Terraform destroy आ तुम कंसोल जाई कि डिलीट करिया पड़िबो एठी हम डिस्ट्रॉय कर परिबो सी इंटर वैल्यू यस डिस्ट्रॉय करबे देतो सब जगह इंफॉर्मेशंस देउची ठी कोन वैल्यू देखो एडी कंप्लीट दे दोची इमेज ARN दे देला राइट एटी IP address public IP address private IP address public IP address complete details सब डिटेल्स दे दोची कोन तमे को सर्वर डिटेल वॉल्यूम आईडी कोन सब डिटेल्स वॉल्यूम साइज एज बाय डिफॉल्ट हम किस तो मेंशन करि नथिले ना वॉल्यूम साइज केते दरकार ता विषय भी हम जानिबा रूट ब्लॉक डिवाइस केमति सेटअप करिवो केमति जानियो कंप्लीट वॉल्यूम टाइप केमति सेटअप करिवो ता विषय हम धीरे धीरे जानिबा पे डिफरेंट कोन हमको रिसोर्स यूज करिया पड़िवो राइट तो एंटर वैल्यू यस so it's now destroying the server तो मैं जदि जीबी एटी की रिफ्रेश करी सी शटिंग डाउन so ये सर्वर टा कोन गला शट डाउन कर राइट शटिंग डाउन आगे सैंपल है see still destroying it will take some time to destroy तो एठी हमें कोन कोछ टर्मिनेट कर दोची completely it will terminate the server
जोटा कि हमें मैनुअली टर्मिनेट करूचे एटी हमें डिस्ट्रॉय कले माने हम करबो ना टर्मिनेट कर दबो ओके सी terminated formula one resource destroyed ओके सो एमती हमें कौन करबा ना किसी भी रिसोर्स आज देखले हमें केवल गोटे सर्वर केमती हमें प्रोविजन करबा आताको डिस्ट्रॉय करबा टर्मिनेट करबा देखि देले राइट दैट्स ऑल गाइस आज पई इति कि थाओ हमें नेक्स्ट क्लास रे मोर डिटेल्स रे जानिबा प्रोविजनिंग ऊपर ता सहित हमें डिफरेंट टॉपिक्स ऊपर कवर करबा टेराफॉर्म रो ओके तो एडवांस आडको मूव करबा तबे जानी गले केमती कोन सेटअप करबे केमती कोन टेराफॉर्म लाखिबो तो तुम टास्क कला वर्तमान गोटे रिसोर्स करिवो गोटे मते EC2 इंस्टेंस उबुंटू मशीन क्रिएट करिवो Terraform फाइल लिखी कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी गोटे उबुंटू EC2 इंस्टेंस क्रिएट करी मते देखिबो WhatsApp रे पिंग करी ओके ओके गाइस चलो बाय बाय